Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing fine. So today we are going to study a very important topic of sociology, that is social institutions. So before we begin, let me ask you a simple question. सोचो आप कल उठो और वर्ल्ड में कोई फैमिली ना हो, कोई स्कूल ना हो, कोई लॉ ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई रिलीजन ना हो, क्या होगा? आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? और लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? डिस्प्यूट रिजॉल्व कौन करेगा? अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं हुए तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। और सोसाइटी स्मूथली फंक्शन इसीलिए कर पाती है क्योंकि उसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो आज की वीडियो में हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस, टाइप्स को समझेंगे और इसके अलावा एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस भी समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us begin with definitions of institutions. So the first definition is given by Ginsburg. He states, recognized and established usages governing relations between individuals and groups. Let us understand this definition word by word because sociology definitions often sound complicated. The first important phrase is recognized and established usages. इसका क्या मतलब है? It means certain ways of behaving have become accepted by the society over a long period of time. For example, जब हम किसी से मिलते हैं तब हम उन्हें ग्रीट करते हैं। इंडिया में आप नमस्ते कहते हो यूजुअली, कुछ कंट्रीज में आप हैंडशेक करते हो, जापान में पीपल एक दूसरे से मिलते हैं तो बो करते हैं। नोटिस दैट नोबडी फोर्सेस पीपल टू डू दिस एवरी डे, लेकिन फिर भी ये पैटर्न कंटिन्यू होते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने इससे एज अ प्रॉपर बिहेवियर की तरह रिकॉग्नाइज किया है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रेज पे फोकस करो, गवर्निंग रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंस्टीट्यूशंस जो है वो रेगुलेट करते हैं कि लोग एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड को अपने पेरेंट्स की तरफ कैसे बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स टीचर कैसे बिहेव करना चाहिए, सिटीजन्स को टुवर्ड्स गवर्नमेंट कैसे बिहेव करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन सारे इन क्वेश्चंस का आंसर देता है। Therefore, according to Ginsburg, institutions are accepted rules that regulate human relationships. In simple words, institutions are socially accepted rules that guide human interactions. Now let us understand the second definition that is given by McIver and Page. Established forms or conditions of procedure characteristic of group activity. So McIver and Page focus on procedure. So आप एक यूनिवर्सिटी के बारे में सोचो, क्या सिंपली कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में वॉक कर रहा है उससे डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। एक प्रोसीजर है, पहले एडमिशन होगा, फिर क्लासेस अटेंड करनी है, अटेंडेंस उसको एडिक्वेट मेंटेन करनी है, असाइनमेंट्स होंगे, एग्जामिनेशन होगा, फिर उसका इवैल्यूएशन होगा, फिर ग्रेजुएशन होगा और फिर डिग्री मिलेगी। और हर स्टूडेंट को ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। सो the procedure is more important than the college building. The building जो है वो बदल सकती है लेकिन procedure same रहेगा. This organized procedure is what McIver and Page call an institution. एक एग्जाम्पल लो, जैसे क्रिकेट मैच है, जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेडियम नहीं है, इंस्टीट्यूशन रूल्स हैं गेम की। Similarly, education is not the school building. It is the established procedure through which knowledge is transmitted. Now let us come on to the third definition that is given by Kingsley Davis. A set of interwoven folkways, mores and laws built around one or more functions. So Kingsley Davis हमें ये बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन एक सिंगल रूल से नहीं बना होता, वो बहुत सारे सोशल रूल्स का कलेक्शन होता है। अब जैसे मैरिज है, उसमें कस्टम्स होंगे, ट्रेडिशन होंगे, रिलीजियस रिचुअल्स होंगे, मॉरल एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, लीगल रेगुलेशंस भी होती हैं कई बार, सोशल ऑब्लिगेशंस, ये सारे कंबाइन होते हैं तब एक मैरिज का इंस्टीट्यूशन बनता है।
Therefore, institutions are like a woven fabric. Many threads come together to create one structure. And the last definition is given by H.E. Bernays. Bernays compares institutions to machinery. Now you imagine सोसाइटी एक बड़ी फैक्ट्री की तरह है. हर फैक्ट्री को चलाने के लिए गियर्स चाहिए, मशीन्स चाहिए. और अगर एक भी गियर या फिर मशीन मान लो वर्क करना बंद कर जाए तो पूरी सोसाइटी में या फिर पूरी फैक्ट्री में अफेक्ट होता है. सिमिलरली, family produces socialized individuals, education produces skilled citizens, economy produces goods, government maintains order. Each institution performs a specific task and together they keep a society functioning smoothly. I hope आपको definitions अच्छे से समझ आ गई होंगी. अब आपके एग्जाम पर्पस के लिए आपको कम से कम 2 definitions तो लर्न करनी ही है. और क्योंकि एग्जाम में काफी बार जो आपका 4 या फिर 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, उसमें आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और कई बार वो ऐसे भी बोल देते हैं कि आप किसी ऑथर की स्पेसिफिक डेफिनेशन बताओ. तो फिर वो तो देखो टोटली लक फैक्टर हो जाता है कि आप कौन सी लर्न कर रहे हो. लेकिन वैसे आपको कोई भी 2 कम से कम लर्न करनी तो है ही. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की इंस्टीट्यूशन के. सो फर्स्ट फीचर है इंस्टीट्यूशन का सोशल इन नेचर. कोई भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. आप अपने रूम में बैठे हुए हो और आप कोई सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं बना दोगे. इंस्टीट्यूशन को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों को उसे रिकॉग्नाइज करना होता है और फॉलो करना होता है. Consider marriage. Marriage is not simply a relationship between two individuals. It involves family approval, legal recognition, social acceptance, and cultural expectations. Therefore, institutions are social creations rather than individual creations. एक और एग्जाम्पल है जैसे social media influencers can create trends, but a trend becomes an institution only when society accepts it over generations. The next feature is universal. This characteristic means institutions exist everywhere. Human beings institutions के बिना survive नहीं कर सकते. हाँ, institutions अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट हर सोसाइटी में करते हैं. जैसे मान लो इंडिया में अमेरिका में ट्राइबल सोसाइटीज में हर सोसाइटी में आपको मैरिज का इंस्टीट्यूशन दिखेगा ही. हो सकता है कि रिचुअल्स अलग अलग हो लेकिन इंस्टीट्यूशन हमेशा होता है. सो इंस्टीट्यूशंस आर यूनिवर्सल बिकॉज ह्यूमन नीड्स आर यूनिवर्सल एंड इंस्टीट्यूशंस cater to certain human needs. The next feature is standardized norms. आप इमेजिन करो कि आप एक कोर्ट रूम में एंटर कर रहे हो और जैसे जब कोर्ट रूम में जज आता है तो लोग खड़े होते हैं. People stand when the judge enters. Lawyers अपना प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं. एविडेंस जैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर मैनर में करोगे. क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस क्रिएट स्टैंडर्डाइजेशन एंड विदाउट स्टैंडर्ड रूल्स एवरी सिचुएशन it would become unpredictable. Example, traffic rules are institutionalized norms. They make driving predictable. And fourth feature is satisfy human needs. This is extremely important. Institution एग्जिस्ट ही क्यों करता है? क्योंकि ह्यूमंस की कुछ नीड्स होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन आपकी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करता है. इकोनॉमी आपकी इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करती है. रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन आपकी स्पिरिचुअल नीड्स को सेटिस्फाई करता है. एजुकेशन आपकी इंटेलेक्चुअल नीड्स को सेटिस्फाई करता है और गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी नीड्स को सेटिस्फाई करता है. अगर इंस्टीट्यूशंस नीड्स को सेटिस्फाई करना बंद कर देंगे तो सोसाइटी वुड इवेंचुअली रिप्लेस देम. फॉर एग्जांपल पीपल मतलब स्टूडेंट्स सिर्फ बिल्डिंग्स उन्हें पसंद है इसीलिए तो स्कूल नहीं अटेंड करते. स्कूल इसीलिए अटेंड करते हैं और एग्जिस्ट भी इसीलिए करते हैं क्योंकि सोसाइटी में एजुकेशन की नीड है. ठीक है. लास्ट फीचर इज कंट्रोल मैकेनिज्म. ह्यूमन बीइंग्स में डिजायर्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं.
अगर सब अपने इम्पल्स में एक्ट कर देंगे तो सोसाइटी बहुत क्योटिक हो जाएगी। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं टू रेगुलेट बिहेवियर। फॉर एग्जांपल जैसे लीगल सिस्टम है वो क्राइम डिस्करेज करता है, रिलीजन जो है वो इमोरल कंडक्ट डिस्करेज करता है, फैमिली जो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और एजुकेशन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। So individuals, we can say, convert biological individuals into social beings. I hope the features are clear. Let's move on. जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सोसाइटी वो कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी में बिटवीन जनरेशन्स। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ वैल्यू सिखाई, फिर आप बड़े हो गए, फिर आप सेम वैल्यूज पास ऑन करोगे टू योर चिल्ड्रन, एंड दिस इज हाउ इंस्टीट्यूशंस सर्वाइव अक्रॉस सेंचुरीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन मॉडर्न स्कूल से पहले भी था। एंशियंट इंडिया में गुरुकुल्स थे, आज हमारे पास स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं। मेथड बदला है लेकिन इंस्टीट्यूशन हैज सर्वाइव्ड। दैट्स व्हाई सोशियोलॉजिस्ट से इंस्टीट्यूशंस आर रिलेटिवली परमानेंट। The next important feature is abstract in nature. This characteristic is often confusing for students, so pay close attention. Social institutions are abstract. What does abstract mean? It means they cannot be physically seen, touched, weighed, or measured. मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप मैरिज को टच कर सकते हो? क्या डेमोक्रेसी को अपने हाथों में पकड़ सकते हो? क्या लॉ को आप कैन यू पुट इट इनसाइड अ बॉक्स? Of course not. Yet all these things clearly exist. Why? Because institution कोई physical object नहीं है. They are system of norms, values, expectations and procedures. Many students make the mistake of confusing organizations with institutions. For example, a school building is concrete, education is abstract, temple is concrete, but religion is abstract. Court building is concrete, yet law is abstract. The building may be destroyed, yet the institution continues to exist. A school may close down, but education as an institution remains. A temple may be demolished, but religion as an institution continues. This is why sociologists describe institutions as abstract realities. Moving on, oral and written traditions. Institutions are transmitted from one generation to another. But how does this happen? It happens through traditions. In early societies, institutions were mostly preserved through oral traditions. People passed knowledge through stories, customs, songs, and rituals. Children learned acceptable behavior simply by observing elders. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज के पास कोई बुक रिटन लॉ बुक्स नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और क्या बिहेवियर प्रोहिबिटेड है. These rules were passed orally from generation to generation. As society became more advanced, institutions increasingly relied on written traditions. Today we have constitutions, law books, contracts, school regulations, university syllabus, religious scriptures, and government policies. All these preserve institutional rules in written forms. For example, Constitution of India preserve political institutions. University rule books preserve educational institutions. Religious texts preserve religious institutions. Thus, institutions can be maintained through both oral and written traditions. The next is synthesizing symbols. Every institution develops symbols that represents its values and ideals. Human beings connect emotionally with symbols. Because of this, institutions often use symbols to strengthen identity and unity. Think about national flag. A flag is just a piece of cloth, yet people are willing to sacrifice their lives for it. Why? Because it symbolizes the nation. Similarly, religious institutions use symbols. Cross symbolizes Christianity, the crescent symbolizes Islam, Om symbolizes Hinduism. Marriages use symbols too. Wedding rings, sindoor, mangalsutra. These objects symbolize the institution of marriage. Educational institutions also use symbols.
college logos, convocation ceremonies, school uniforms. These symbols remind people of their membership and strengthen loyalty towards the institution. In this way, symbols help institutions maintain unity and continuity. Lastly, interrelated. कोई भी इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन में वर्क नहीं करता. नो इंस्टीट्यूशन वर्क्स इन आइसोलेशन. सारे इंस्टीट्यूशंस इंटरकनेक्टेड होते हैं. आप सोसाइटी को एज अ ह्यूमन बॉडी सोचो. हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनीज सब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन दे डिपेंड अपॉन वन अनदर एज वेल. और अगर एक ऑर्गन फेल हो जाता है तो इंटायर बॉडी सफर्स. सेम प्रिंसिपल्स इंस्टीट्यूशन पे भी अप्लाई होता है. फैमिली आपके एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है. एजुकेशन इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है. इकोनॉमी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है. पॉलिटिक्स लॉ को इन्फ्लुएंस करता है. लॉ को अगेन फैमिली लॉ अगेन इन्फ्लुएंसेस फैमिली टू somehow. दिस मीन्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकम्स वीक. Students do not receive quality education and they receive poor education. What would be the result of it? I think employment opportunities would decrease, economic productivity would fail, economic productivity would fall, poverty increase, crime rates may also rise, and government may face pressure. So a problem isn't one institution, if you noticed. However, it affected several others. This demonstrates the interrelated nature of institutions. Another example, during the COVID-19 pandemic, educational institutions shifted online. Economic institutions suffered losses. Government introduced new policies. Families spent more time together. Religious gatherings were restricted. A change in one area affected every other institution. Therefore, sociologists emphasize that institutions function as an interconnected system rather than as separate units. So, these were the remaining characteristics of social institutions. To revise, institutions are relatively permanent because they survive for long periods. They're abstract because they consist of norms and values rather than physical objects. They're transmitted through oral and written traditions. They develop symbols that strengthen identity and unity. And finally, they are interrelated because every institution influences and depends on others. Let's go ahead. So now we have types of institutions. So basically there are two types of institutions, primary institutions and secondary institutions. So primary institutions are those जो कि बहुत पहले से exist कर रहे हैं, even before the development of modern and complex societies. For example, family, religion, marriage, property, political system. ये काफी सदियों से चले आ रही हैं ये सारी इंस्टीट्यूशंस. इनफैक्ट ट्राइबल सोसाइटीज में भी इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते थे. हाउएवर ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस जो है वो तब इमर्ज होते हैं जब सोसाइटी मॉडर्न या फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे एजुकेशन, एग्जामिनेशन, लॉ एंड लेजिस्लेशन, बिजनेस, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर. दीज आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस. तो अब देखो जो इंस्टीट्यूशंस थे वो मतलब हर इंस्टीट्यूशन सेम टाइम पे डेवलप नहीं हुआ. कुछ बहुत पुराने थे जो कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ जो थे वो बाद में इमर्ज हुए. दोज आर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. उसके बाद समनर क्लासिफिकेशन. सो समनर ने दो क्लासिफिकेशंस की. पहला उसने बोला क्रिसेसिव इंस्टीट्यूशंस. दीज डेवलप नेचुरली ओवर टाइम. These are like primary institutions, family, religion, marriage, property, political system. And the next is enacted institutions. Enacted में वो आते हैं जो deliberately create होते हैं, जैसे parliament, courts, universities, companies. Moving ahead, now we have to study why institutions are important. So functions of institutions. Every institution exists because it performs certain functions. Let us
understand. The first function is satisfy human needs. Institutions जो है वो human needs को fulfill करते हैं in an organized way and efficiently also. जैसे religious institution जो है वो spiritual needs को cater करता है humans की. Secondly, control behavior. They replace social institutions replace random behavior with predictable behavior. For example, जैसे अगेन क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो है वो हैंड रेस करते हैं कुछ भी बोलने से पहले. सो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस बिहेवियर एक पैटर्न्ड बिहेवियर या फिर एक्सपेक्टेड कंडक्ट से रिप्लेस हो रहा है. थर्ड इज सिंप्लीफाई एक्शंस. इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टाइम और एफर्ट दोनों सेव करते हैं और कंफ्यूजन को रिड्यूस करते हैं. हर जनरेशन को एजुकेशन अब री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैरिज या गवर्नमेंट, वो ऑलरेडी चले आ रहे हैं. हाँ, हो सकता है कि समय के साथ आपको उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़े, बट कम्प्लीटली आपको री इन्वेंट नहीं करने हैं. तो इससे आपका टाइम भी सेव हो रहा है और आपका जो एक्शंस है वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं. जैसे रिलीजन है, आप जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आप फॉलो करते हो वो चले आ रहे हैं, आपको नए नए कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं बनाने पड़ रहे हैं. तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, आपके एक्शंस को सिंप्लीफाई कर रहा है ना, आपके सामने एक स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स उन्होंने रख दिए जो आप सिंपली फॉलो कर लेते हो. फोर्थ इज असाइन रोल्स एंड स्टेटस. जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सोशल पोजीशंस को डिफाइन करते हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, जज, पेरेंट, पुलिस ऑफिसर, चाइल्ड, एक्सेट्रा. फिफ्थ इज प्रमोट यूनिटी. Institutions bring people together through common norms and values. एग्जाम्पल जैसे नेशनल फेस्टिवल्स हो गए, स्कूल असेंबलीज हो गई, रिलीजियस सेलिब्रेशंस हो गए. तो आप जिस भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो आप उसके थ्रू बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहोगे. मैनिफेस्ट फंक्शंस. मैनिफेस्ट फंक्शंस आर इंटेंडेड फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइमरी पर्पस क्या है स्कूल का, एजुकेशन प्रोवाइड करना. गवर्नमेंट का क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. दिस इज व्हाट इज मैनिफेस्ट फंक्शन. मूविंग अहेड. Now next is the difference between association and institution. Now this topic is important from examination perspective, so pay close attention. So the first difference: association is a group of people organized for a common purpose, whereas institution is an organized way or a procedure of doing things. इसका क्या मतलब है? एसोसिएशन में लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए साथ आते हैं. जैसे कॉलेज है, उसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ है, तो वो एक एसोसिएशन है. पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मेंबर्स हैं, वो कुछ पॉलिटिकल मोटिव उनका पावर में आना, इसीलिए वो साथ में आ रहे हैं. स्पोर्ट्स क्लब में प्लेयर्स होते हैं. तो these all are associations. Institutions on the other hand is not a group of people. It is a system of rules, norms and procedures through which an activity is carried out. Example: education is an institution, democracy is an institution, marriage is an institution, religion is an institution. For example, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो वो एक एसोसिएशन है, लेकिन एजुकेशन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है. University is made up of people. However, education is the organized system through which knowledge is transmitted. The second difference: association, we belong to it, whereas on the other hand, institutions, we do not belong to it. So when we become members of an association, we can say that we belong to it. For example, I belong to bar association. I belong to a political party. But can you say I belong to education? I belong to marriage. I belong to democracy? No, because institutions are systems, not memberships. We participate in institutions, we do not belong to them. For example, you belong to your college. You participate in the institution of education. This is a very important distinction. Alright, moving ahead, association is concrete, however, institution is abstract. So an association does have a physical existence. You can see it, you can identify its members, you can locate its office. An institution, on the other hand, is abstract. You cannot touch it or physically see it. For example, you can see a school building, you can see teachers, students, principal. These make up the association. But education as an institution cannot be touched.
It exists as a system of ideas, values, and procedures. Similarly, you can see a code building, but you cannot see the law itself because it is abstract. Therefore, associations are concrete while institutions are abstract. The next difference is association has a physical location and institution again has no physical location. Every association occupies a particular space. A school has an address, university has a campus, company has an office, sports club has a ground. Therefore, associations can be physically located, institutions cannot. For example, can someone ask you where is education located? No. However, can someone ask you where is democracy located? No. These institutions exist throughout the society rather than in a particular building. This is why institutions have no specific physical locations. The next difference is associations. They're deliberately created. However, institutions evolve gradually. For example, associations जो है वो यूजुअली आप इंटेंशनली फॉर्म करते हो, लोग डिसाइड करते हैं कब बनानी है, कैसे बनानी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नया मुझे नया एनजीओ आज एस्टेब्लिश करना है, कल मुझे कोई कंपनी रजिस्टर करानी है, स्पोर्ट्स क्लब खोलना है मुझे. लेकिन इंस्टीट्यूशंस आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मुझे एक नया इंस्टीट्यूशन बनाना है. These generally evolve slowly over long periods of time. Nobody sat down even thousands of years ago and officially created marriage. Nobody issued an order creating religion. These institutions gradually developed as human societies evolved. The next difference is association may be temporary or permanent. However, institution is relatively permanent. एसोसिएशंस जो है वो काफ़ी क्विकली भी डिसअपियर हो सकती हैं. जैसे एक स्टूडेंट क्लब है मान लो, तो हो सकता है वो कुछ एक ही साल एग्जिस्ट करे. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई मान लो वो डिसॉल्व हो सकती है. बिजनेस कंपनी है वो शट डाउन हो सकती है. एसोसिएशंस कम एंड गो. इंस्टीट्यूशंस जनरली सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. For example, thousands of schools have opened and closed throughout history, but institution of education continues. Many governments collapsed, but institution of government remains. Many temples, churches, mosques have disappeared, but religion continues. Therefore, institutions are far more durable than association. Moving ahead, this is just for your mere knowledge. Institutions in everyday life. So these are some institutions like family, religion, education, economy, government, marriage that you come across every day. They are around you. That's it. Now a quick recap uh, of what we studied. Institution is organized norms and procedures governing social behavior. They are universal. They're found in all societies at all stages of development. Abstract. They are relatively permanent and control human behavior. There are two types of institutions, primary and secondary. Primary includes family, religion. Secondary includes education, law. Some of the functions institutions cater to human needs. They control behavior, assign roles and status. Association is a group of people. Institution is a way of doing things. Thank you. I hope you understood this topic clearly. If this helped you, please like, subscribe and comment below and share this video among your friends. See you in the next video.